Now we are going to discuss the Newton's formula for the longitudinal waves. So Newton's formula for longitudinal waves. So Newton said that the speed in the longitudinal wave is directly proportional to the elastic coefficient and density like A and B. So V equals to K e power A and D power B, where E equals to coefficient of elasticity and D equals to density of the medium. So on solving dimensionally, its formula will form like this: E upon D. V equals to E upon D under root. Okay, so according to the Newton, for the solid, this elastic coefficient will be equals to the Young modulus. Okay, so speed will be equals to the Y by D. For liquid, this elastic coefficient will be equals to the bulk modulus. So speed will be equals to root V by D. Okay, and for the gaseous medium, according to Newton, there will no change in temperature whenever these longitudinal waves be propagate. यानी जब लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स किसी गैसियस मीडियम में प्रोपागेट होती है तो वहां पर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन दिस विल बी इक्वल टू द isothermal elastic coefficient and that value is P. So V will be equals to the ET upon D, that is equals to P upon D. But that was the wrong. According to the Laplace it be corrected, और लाप्लास ने इसको करेक्ट किया क्योंकि ये फैक्ट पाया गया कि जब लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स गैसियस मीडियम में प्रोपागेट होती हैं तो वहाँ टेम्परेचर चेंज होगा. यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द न्यूटन देयर विल नो एनी चेंज इन द टेम्परेचर when the longitudinal waves propagate in the gaseous medium. So according to this elastic coefficient will be equals to the isothermal elastic coefficient and its value is Et is equals to P. So according to this V equals to root over P by D, but that formula was wrong. So it was corrected by Laplace. So this is the Laplace correction. So according to the Laplace, whenever longitudinal waves propagate, then in the time of compression some temperature be rises and in this time some temperature be fall. Okay, so here temperature is not constant. According to the Laplace, whenever longitudinal waves we proceed or propagate, then in times of C and D, compression and diffusion, there will rise and fall of the temperature. So we can say that temperature is not remains constant, but this process is very fast. Due to this, here no change in heat due to the surrounding or this atmosphere and this spring. ओके, यहाँ इस स्प्रिंग और इस मीडियम के बीच में कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होगा. टेम्परेचर राइज करेगा, यहाँ पर टेम्परेचर फॉल करेगा, बट नो चेंज इन हीट. मीन्स ये प्रोसेस इतनी फास्ट हो जाती है
कि यहाँ पर जो भी हीट रिलीज होगी वो नेक्स्ट प्रोसेस में मिल जाएगी, यहाँ भी नेक्स्ट प्रोसेस में चली जाएगी। इस तरीके से वो हीट का ट्रांसफर एटमॉस्फेयर में नहीं हो पाता। सो अकॉर्डिंग टू द लाप्लास, whenever longitudinal waves propagate in terms of c and t, then temperature rises and falls consecutive order or gradually, but this process is very fast. So due to this, no change in heat due to this medium and this atmosphere. So no change in heat, and here temperature changes, so formed adiabatic condition. So here this elastic coefficient will be equal to the adiabatic elastic coefficient, that's value is gamma p. So according to this, V equals to Es by d, and that's value is gamma p upon d. Okay, so this is the Laplace correction. And now effect of the temperature. First of all, effect of temperature on the speed of longitudinal waves. So this formula is root gamma p upon d, but we know that PV equals to RT for 1 mole gas. So nRT, where n equals to W upon m, weight upon molecular weight. So P equals to W RT upon m into V. So weight upon volume. W by V equals to density. So P equals to D RT upon m. So P by D equals to RT upon m. देखिए, we know that this is the ideal gas equation. PV equals to nRT, where n equals to number of moles, weight upon molecular weight, and V is the volume. So we convert this volume and the weight upon molecular weight. So weight upon volume is equals to density. So P equals to D RT upon m. So P by D equals to RT by m. So putting this value in equation first. So P equals to under root gamma P by D, that is equals to under root gamma RT upon m. So according to this, we can say that speed of longitudinal wave directly proportional to the square root of temperature. Means if temperature rises, then speed of longitudinal wave be increased. Okay, if temperature decreases, then its speed will also be decreases. So this is the relation between the speed and temperature. So now effect of pressure. So we know that P by D equals to R P by M, where R is also constant value, M also molecular mass, and this is the constant for any gas. So if T constant, अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो जाए, देन RT by M जो होगी कंप्लीटली क्या हो जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। ये तो आपने फैक्ट डिसाइड कर लिया कि यहाँ पर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आ रहा है। सो इसके अकॉर्डिंग स्पीड जो है, अगर टेम्परेचर राइज करेगा तो स्पीड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की राइज करेगी, बट अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए तो बाकी सारी वैल्यू कांस्टेंट होने की वजह से ड्यू टू दी ऑल द कांस्टेंट वैल्यू RT by M, this value will be constant, so there will no effect of the pressure if temperature remains constant. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए तो फिर इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की स्पीड पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके, सो दिस इज द कंक्लूजन। एंड नाउ लेट मी डिस्कस कि हाउ मच स्पीड विल राइज इफ टेम्परेचर राइजेस 1 डिग्री सेल्सियस। So let me prove here Vt equals to V naught plus 0.61 T. This formula
and this is the effect of the temperature on the speed of longitudinal wave. So according to this, we know that V equals to gamma RT upon M. So find T equals to 0 degree Celsius, then this is equals to V naught under root gamma R 0 plus 273 upon M, and find T equals to T degree Celsius, then Vt equals to under root gamma R T plus 273 upon M. This is the second equation. Okay, so now equation 2 divided by equation 1, so it is equals to Vt upon V naught equals to under root gamma R T plus 273 upon M over gamma R 273 upon M. gamma RM cancel out हो जाएंगे, so it will be equals to Vt by V naught equals to root T plus 273 upon 273. Okay, so we can write this Vt upon V naught equals to T upon 273 plus 273 upon 273 1 under root मतलब power 1 by 2. So Vt equals to V naught, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 plus T upon 273 whole power 1 by 2. अब ये टर्म जो लिखा है 1 plus x पावर n इक्वल टू 1 plus nx, बाइनोमियल थ्योरम से इसको हम एक्सपेंड कर देंगे. सो Vt इक्वल टू V नॉट 1 plus 1 by 2 T upon 273 ये आ जाएगा. या हम इसको लिख सकते हैं Vt इक्वल टू V नॉट प्लस V नॉट इंटू T अपॉन 546. And the value of V naught according to Newton is 330. So let me repeat here. This V is equals to gamma RT by M. So when T equals to 0 degree Celsius, then V naught equals to gamma R 0 plus 273 by M. Absolute temperature में convert करने के बाद ही इसको solve करेंगे. And when T equals to small t degree Celsius, then Vt equals to gamma RT plus 273 by M. Equation 2 divided by equation 1 like this. So Vt by V naught equals to T plus 273 by 273 under root, and we can write this like this. So Vt equals to V naught 1 plus T by 273 power 1 by 2, and we'll open like this binomial theorem 1 plus x power n equals to 1 plus nx. So it will be equals to this, and according to the Newton, speed at 0 degree Celsius is 330 meter per second. So whenever we will put this value, so Vt इक्वल्स टू V नॉट प्लस ये वैल्यू पूरी सॉल्व होकर 0.61t आ जाएगी. ओके, मीन्स V नॉट अपॉन 546 मीन्स 330 अपॉन 546, दैट इज इक्वल्स टू 0.61. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला. सो फाइंड लेट T इक्वल्स टू 0, तो V फर्स्ट आ जाएगी इक्वल्स टू V0 प्लस 0. ओके, एंड व्हेन T की वैल्यू 1 डिग्री सेल्सियस आ गई तो V सेकेंड वैल्यू आएगी. T की जगह हमने सेकेंड निकाल रहे हैं. अब ये जो वैल्यू है V नॉट प्लस 0.61 इतनी आ गई. देखिएगा, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था तो स्पीड कितनी थी V नॉट. जब टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस हो गया तो V नॉट में कितना ऐड हो गया 0.61. ओके, तो कितना चेंज हुआ टेम्परेचर का 0 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री सेल्सियस में चेंज हुआ 1 डिग्री सेल्सियस, और V नॉट प्लस 0.61 स्पीड में कितना चेंज हुआ 0.61. सो वी कैन से दैट इफ टेम्परेचर इंक्रीज और चेंज 1 degree Celsius, then speed of the longitudinal wave will change 0.61 meter per second. Okay.